power dissipated in pure resistance in AC circuit. This is a pure resistance connected to a source of alternating EMF. E equals E naught sin omega t. So what is the instantaneous current? Applied voltage. Applied voltage meaning actually voltage across pure resistance कितना E equals E naught sin omega t. Then instantaneous current, it is same, I equals I naught sin omega t. ठीक. इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि एसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस और करंट दोनों ही वेरिएबल है, देयरफॉर द पावर इज नॉट ऑलवेज आई स्क्वायर आर बिकॉज आई इज चेंजिंग विद टाइम. So there is no constant power of this pure resistance in AC circuit. So what will be the instantaneous power? Instantaneous power equals what? EI. Then power equals E naught I naught sin square omega t. So what is instantaneous power? Instantaneous power is the rate of doing work. E naught I naught sin square omega t. Then a small amount of work done. A small amount of work done for in time in a small time dt. dw equals E naught I naught sin square omega t dt. Total work done. Total work done over one complete cycle. Over one complete cycle, total work done what will be? It is integration of dw from time 0 to time t, where capital T is the time period for one complete cycle. So d omega, sorry, not omega, it is work done. Integration from time 0 to t, how much? E naught I naught sin square omega t dt. E naught I naught is constant. Integration from 0 to t sin square omega t 1 minus cos omega t 1 minus twice of cos omega t divided by 2. राइट, एक्चुअली क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला था वो. W equals E naught I naught integration from 0 to t 1 minus cos 2 omega t divided by 2. Now E naught I naught by 2 from 0 to t 1 minus cos 2 omega t dt. W equals E naught I naught by 2. सीधे कर दूं इसका इंटीग्रेशन 1, क्या बनेगा ये? इट विल बी कैपिटल T माइनस 0, कंफर्म 0, कितना
sin 2 omega t by 2 omega, and the limits are from 0 to t. Then W equals E naught I naught by 2 capital T minus sin 2, what is omega? 2 pi by capital T and into capital T. Okay, minus how much? Sin 0 divided by 2 omega. It is sin 4 pi. Sin 4 pi is equals to sin 2 pi. Sin 360, it is again 0. So this factor, all this factor, it is reduced to 0. Then W equals E naught I naught by 2 into capital T. Right? Average power. Average power dissipated over one complete cycle. Work done divided by time. Total time over one complete cycle, capital T. So what it is? पावर के ऊपर लाइन इसलिए लगाते हैं, ये एवरेज पावर रिप्रेजेंट करता है. नहीं लगाइए, से मत लगाओ. एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ई नॉट आई नॉट टी बाय 2t. तो सिंपल सी बात है, एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ई नॉट आई नॉट बाय 2. देन एवरेज पावर ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2. व्हाट इज दिस ई नॉट बाय रूट 2? ERMS, IRMS. So average power dissipated over one complete cycle is ERMS dot IRMS. That's why root mean square value is more relevant than any of the value of current or voltage. Peak value, mean value से कहीं ज्यादा relevant है IRMS. और यहां भी आप सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं. पावर, एवरेज पावर इन स्टेडी करंट इज इक्वल्स टू V इंटू I, एवरेज पावर. सो दिस इज द कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट वोल्टेज, एंड ERMS आर द कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ AC, जो घटते बढ़ते हुए AC के वोल्टेज के बराबर है. यहां भी आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं.